one of our key team members, sir. We visited both the district, interacted with various stakeholders. So Dhananjay also went with me to Chamoli and Devprayag, means Tehri. And I think Veena Rai is also there. Veena ji aa gayi hai kya meeting mein? Yes. So yes, yes. Good morning. So she was one of the key field persons जो हमारी SHGs visit हुई हैं. So Dhananjay, Veena, Rahul, वो लोग भी थे, but Dhananjay and Veena are joining. Okay. So पहले ये तो बताओ कि आप लोग का आज सुबह ही छठ पूजा हुआ है कंप्लीट, तो अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ. धनंजय जी के यहाँ भी हुआ है सुबह का. Yes, yes. Because I grew up in the place which is very much like, it's adjacent to your Jharkhand. Sangeeta, you have to mute yourself. So West Bengal and Jharkhand, so like lot of mixed cultures are there. Yes. No, this is one of the biggest festivals. Eastern India में. Very much. मतलब. I think after, Diwali is something different. क्या हो रहा है, क्यों इतना इको हो रहा है? संदीप, मुझे तो नहीं इको हो रहा. धनंजय, आप भी म्यूट कर लो. कहाँ से हो रहा है? मेरे यहाँ से हो. हाँ. म्यूट तो या हाँ अभी ठीक है. कर दिया है संगीता. ऊपर है, ऊपर राइट साइड में. So now it is fine. So like in our, I think apart from Diwali, for in Eastern then chart something like this. Chart is a big festival and lot of Bihari cookies. Where is Krishna? Yeah, I'm here, sir. थोड़ा सा adjusting the camera. Okay. Let us start. Yes, sir. So welcome all. Good morning. And Amrish is also joining, or it's okay? Yeah. No, today there is this. So okay. Because of this meeting, I didn't go. Yeah. No, but it was good, sir. It was really a nice season that we planned all this thing before Diwali. So as I had mentioned in the plan, so I, Dhananjay, Veena, Rahul, 4 people went. I think on okay. जो भी डेट था. And because the DDMs were quite cooperative, उनसे पहले ही बात कर लिए थे. So it was a overall the terrain is very difficult. मतलब वो तो है ही, मतलब villages में जाना हो रहा था. Right. It was taking a lot of time and effort also. But I think the DDMs were very supportive. So दोनों DDM से हमारी मीटिंग हो गई. SRLM से भी हमारी मीटिंग हुई. चमोली SRLM से मीटिंग नहीं हुई, बट फोन पे बात हो गई है धनंजय जी की. And we met the bankers in both the district. And ये धनंजय जी वो वाला कहाँ गए थे ये सेंटर्स पे, जो ट्रेनिंग वाला था रूट सेटी. Dhananjay, you have to unmute yourself. आपका म्यूट है. Okay. Good morning, sir. Good morning, Krishna ji. Good morning, Sudhir ji. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. चूंकि ये मेरा पहला इंटरेक्शन है आप लोग के साथ,
जैसा कि सर ने बताया भी। तो हम लोग चमोली डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट पर्सन से मिले, एनजीओ वाले से मिले, या से एनजीओ। मिले, बहुत सारे जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर थे गांव के उनसे मिले, और उनके जो लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए उनसे मिले। जैसे यार हम लोग SRLM वहाँ पे संजय पुरोहित जी, उनसे मिले। DIC वाले हैं चमोली में, उनसे मिले। कंवर विक्रम जी थे। उसके बाद RCT में राव जी थे, उनसे ट्रेनिंग के बाद ली क्या क्या प्रोग्राम रन करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें वहाँ पे आई। चूंकि चमोली डिस्ट्रिक्ट, जहाँ तक हम लोग को बात से पता चला कि ये होली प्लेस बद्रीनाथ एंड केदारनाथ दोनों वहीं पे हैं। तो 3 महीने ऑलमोस्ट टूरिस्ट रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो उस क्षेत्र में भी संभावना उन लोगों ने बताया कि बहुत अच्छी थी। ठीक है, बाकी हम लोग जो 3 NGO जिसके बारे में बताया गया था, नंदा देवी, जन मैत्री और और कौन थर्ड वन? कोऑपरेट किया। और कौन थर्ड वन? Which is the third one? ये नंदा गेरवाड़, देवी और श्री नंदा देवी, खेरवाड़, संकल्प, गेरवाड़, हाँ गेरवाड़। गरवाल संकल्प। मिस भावना शर्मा उनकी कोऑर्डिनेटर थी, तो उनसे भी मिले। इसके बाद जो बहुत सारे ब्लॉक्स में हम लोग गए, जिसमें दसौली ब्लॉक फेमस था, मोहन देगी वहाँ के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया। और उसके बाद हमने जोशीमठ में कैलाश काला जी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया, और वहाँ की जो महिलाओं से हम लोगों ने बात करी। फिर कर्णप्रयाग ब्लॉक में हम लोग प्रशांत सूरी जी थे, जिन्होंने हमें अच्छा कोऑपरेट किया, और वहाँ पे बहुत सारी महिलाओं से हमारी मीटिंग कराई। संयोग से वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो वहीं पे हम लोग गए थे। थोड़ी बहुत चीजें भी हुई, बाकी लेटर ऑन उसको मैनेज किया गया, और बहुत अच्छी तरीके से इंटरेक्शन हुआ वहाँ के लोगों से। इसके बाद गैर ब्लॉक में अनिल रावत जी थे, उन्होंने भी हमें अच्छा सपोर्ट किया। तो कुल मिला के चीजें बहुत अच्छी तरीके से प्लेजेंट में लोगों ने कंप्लीट करी। बाकी देवप्रयाग में भी हम लोग जो गए, वहाँ पे हम लोग वहाँ बी कीपिंग की ट्रेनिंग चल रही थी, वहाँ पे महिलाओं से हमने इंटरेक्शन किया। वहाँ पे अंजलि नेकी करके कोऑर्डिनेटर थी, जिन्होंने उस चीज़ को हम लोग के साथ वेल तरीके से मैनेज कराया। और बहुत सारे बैंकर से भी हम लोग मिले। इनफैक्ट बहुत सारे गवर्नमेंट बैंकर, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया के वहाँ के ब्रांच मैनेजर थे मिस्टर अंकित सैनी, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, और बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने कि वो कैसे चीज़ों को हम लोग मैनेज कर रहे हैं। कुछ इश्यूज भी बताए जिस वजह से चीज़ें और बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही हैं, जिस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें मेन था उनका कि इंडस्ट्री इधर नहीं है, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए तो जो हो नहीं पा रही है। फूड प्रोसेसिंग में उन्होंने बताया कि बहुत स्कोप है यहाँ देखिए पे। I mean मेडिसिन, see want to know that आप लोग का कितना हाँ इस मीटिंग में ना व्हाट वी वांट टू नो कि वहाँ पर पूरा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट था, उस डिस्ट्रिक्ट में कितना वो SHG I mean this enterprises are there according to our agreement, how much we have reached, what's the percentage over there, and also like what are the major issues, ऐसे करके बताइए, और what are the major challenges, ऐसे करके बताइएगा ना। तो क्योंकि क्योंकि आप जो बोल रहे हैं, this is your I mean that's the observation definitely would like to understand, but before that if we can get that kind of like very precise presentation, it would be good for us to understand. I will tell that sir। मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअली हमारा जो टारगेट था बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में 200 SHG मेंबर्स से मिलने का था। वी हैव टू कवर अराउंड 6 to 7 ब्लॉक्स एट लीस्ट, क्योंकि वो लिस्ट में तो 9 ब्लॉक्स थे वहाँ पे, लेकिन हम दोनों डिस्ट्रिक्ट में गए, DDM और वहाँ के लोकल एनजीओ से कोऑर्डिनेट करके, और SRLM ने भी हमको काफ़ी सपोर्ट किया, पर्टिकुलरली चमोली में। सो वी वर एबल टू कवर 200 मोर देन 200 मेंबर्स इन बोथ द डिस्ट्रिक्ट। तो वो फील्ड वाला जो विजिट है वो हो गया है,
बट ये है कि वी हैव कवर्ड अराउंड 5 to 6 ब्लॉक्स. एक में 5 ब्लॉक कवर किए, एक में 6 ब्लॉक कवर किए हैं, क्योंकि एक दो ब्लॉक बहुत ही इंटीरियर में थे, बहुत दूर पे थे, और वहाँ पे वो एनजीओ वालों ने भी मना किया, बोला कि सर वहाँ जाके भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, वहाँ पे आप जाने आने में भी बहुत दिक्कत है, परेशानी है. बट एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हमारा जो एसएचजी मेंबर्स का था सर, वो तो हो गया है, एंड दिस हैज बीन हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ बोथ एनजीओज एंड एसआरएलएम. तो जो फील्ड स्टडी का हमारा SRLM has also cooperated, right? या दैट वाज क्वाइट Okay. इंटरेस्टिंग. मतलब एसआरएलएम पर्टिकुलरली इन चमोली तो बहुत अच्छा सपोर्ट दिया. तो उनके जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स ही हमको लेके गए, अदरवाइज हम किसी भी ग्रुप में पहुंच नहीं सकते. वहां पे पहाड़ों में इतना डिफिकल्ट है जाना कि देयर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर वेंट विथ आवर टीम. तो हमने 2 टीम्स बना ली थी, एंड क्योंकि हमको टारगेट था कि दिवाली से पहले वी हैव टू फिनिश इट, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करके हमने सुबह से शाम तक थोड़ा सा ट्रैवल करके गाड़ी वाड़ी बुक करके वो हमने कर लिया. तो फील्ड डेटा हमारे पास आ गया है. वो डेटा का एंट्री भी एम वाटर में हो गया है, एंड उसका एक बेसिक एनालिसिस भी स्टार्ट हो गया. आई थिंक सुधीर विल शेयर सम ऑफ द की फाइंडिंग्स ऑफ दैट, क्योंकि एक इनिशियल डेटा एंट्री हो गई है. सेकेंडली हमारी स्टेक होल्डर से मीटिंग ऑलमोस्ट हो गई है. मतलब एक दो जगह कुछ बैंकर्स का थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि वो फिर रिटर्निंग और दिवाली का एक दिन पहले का था, तो वो नहीं हो पाया, मतलब टिहरी वाला. बट वी हैव कांटेक्ट ऑफ दोज बैंकर्स, तो कुछ हम फोन पे भी कर लेंगे सर, है ना. बाकी एनजीओ, डीआईसी, डीडीएम, ये सारा हो गया है. एंड वो स्टेक होल्डर की रिपोर्ट भी हम बना रहे हैं, मैं और धनंजय उसका एक बेसिक ये बना रहे हैं. हम बना के सुधीर को देंगे, सुधीर इज कंपाइलिंग ऑल. तो व्हाट आवर टारगेट इज कि बाय दिस वीकेंड एक की मतलब जो ड्राफ्ट रिपोर्ट होगा या एक छोटा सा एक ये होगा, वी विल बी एबल टू शेयर पूरे स्टडी की फाइंडिंग्स के हिसाब से. सो फील्ड वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट सर. डेटा एनालिसिस इज गोइंग ऑन. सुधीर आप उस पे ऐड करना चाहेंगे? इन अनम्यूट करिए You are on mute, Sudhir. Sorry, sir. So I think field is completed. The sample size was, I think, 175. I think they have covered more than that. Stakeholders more or less have been covered. So from a sampling point of view and from those point of view, that has been covered completely. I'll come to the major key findings, but before that, we have got our secondary research I have been doing. So NSDC का जो research रहा है skill पे उत्तराखंड में, both Chamoli and Garhwal, that I have, and so we have gone through it, documented some of the things, and first impression from the data which we are getting and what NSD has been saying or other players have been saying, other stakeholders in general, it is, I mean, we are somewhere more or less common on there. So there are major, only one or two things which are different. So major, so the areas of or the industries and areas where it is coming. So tourism is one of the biggest, which is as per members. Now I am stating the data of the members. I'm not stating the data of NSGC and other. From the members' point of view, what they have said that what they would require is, now within tourism there are various categories we had. Within tourism you have communications, you have services and facility management, you had homestay, you had other things. So there are different percentages which have come, but tourism is one of the biggest. Second is followed by your handloom, weaving and handicraft. That is agro processing here. हाँ वो आया है, but I am saying in terms of members percentage. मेंबर्स ने ज्यादा नहीं बोला, लेकिन अदर स्टेक होल्डर्स ने एग्रो का काफी बोला. वो स्टेक होल्डर में आएगा, है ना? So, yes. So that is the one. Second, in terms of percentile, what I am saying, the bigger blocks of it. Then one of the key and उसमें बहुत सारे aspects हैं, है ना? उसमें these are whatever you are telling. It is the reflection of the members, right?
Absolutely, absolutely. Okay, So right ठीक now I'm telling you the reflection of the members. ठीक है. So this is the second. उसमें भी बहुत सारे aspects हैं within handicraft handloom में tech है, technology है, production technology है, raw material है, design है. So there are different variables towards that. Then the second one and the third one comes is the agro-based processing, and उसमें भी branding and packaging is one of the very important factors which they have identified. Vocational training is the next, which I think the youth primarily have said it. That's pretty high on percentile. Animal husbandry, interestingly, is higher in number, but both poultry and goatry are very low in number. So people are interested in poultry and goatry, but animal husbandry has a decent, good number in terms of Percentage. in terms of percentage and interest. Agri only So one. if it is not goatry and your this poultry, what are the things like milching animal and others? Yes. So that's so milk production hai. So there is milk production which is there, but in terms of milk processing and products, so that is not been happening much, and also the supply and marketing of that. So that was one. Agri में सिर्फ एक aspect, एक या दो ही aspect है. Agri में बहुत ज़्यादा नहीं आया है. So not much which has come across. एक दो aspects हैं जो कि important है. But I have to again look at the cases now. And most of our now within Chamoli and Pauri Garhwal, there would be differences. And the key differences which I have noticed is so in Pauri Garhwal, there is also a scope of other smaller industries. So Chamoli has no industry as such. The small scale industry, I can remember. Completely missing. But Garhwal region, this Pauri Garhwal has some of the scope, and there are so like wood industry, fabrication industry, and all. So they have good scope there. Apart from the what we have shared already. So more or less we are on par, on track with what have been the national findings of NSGC and other key players have been there. And data suggests that it's similar in nature. One or two findings we have which is separate than them. Otherwise, yes, common. And I think when we'll have the stakeholder metrics developed, Krishna, you speak about that, then will be much more, we'll have addition on that. या क्योंकि वो डेटा तो अभी हो रहा है एनालिसिस, बट सर दो तीन मेन पॉइंट जो आया था मेरे डिस्कशन में विद द SRLM एंड द DTMs, और एक बी कीपिंग की ट्रेनिंग में भी हम लोग गए थे, तो मेजर फैक्टर आया ना कि उत्तरांचल में ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा हो रही है. मतलब a lot of trainings are happening. वो DIC वाले अपना ट्रेनिंग करा रहे हैं, SRLM अपना ट्रेनिंग करा रहा है, नाबार्ड थ्रू NGOs भी ट्रेनिंग करा रहा है. सो जो ट्रेनिंग हो रहा है ना, और जो लोगों की जो एक्चुअल नीड है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था. जैसे सुधीर भी बताया या मेरा भी था उसमें इंटरेक्शन की, बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स थे ना, वो बोल रहे थे कि सर एग्रो प्रोसेसिंग का यहाँ पे बहुत स्कोप है, क्योंकि अभी अब वहाँ पे एप्पल भी हो रहा है, वहाँ पे कुछ दूसरे फ्रूट्स भी हो रहे हैं. सो दैट इज हैपनिंग. लेकिन जब हम मेंबर से बात कर रहे थे ना, तो दे आर वेरी एवर्स टू डूइंग एग्रीकल्चर. एंड एक तो मेन रीजन है कि वहाँ पे जो मंकीज हैं, मंकीज एंड पिग्स का जो प्रॉब्लम है, तो हर मीटिंग में ना वो पहले ही मेंबर बोलते रहते, सर हम तो बहुत परेशान हैं इन बंदरों से, और ये जो पिग्स हैं ये आके हमारे आलू भी कोड़ के ले जाते हैं, तो हमारे अपने खाने के ही चीज नहीं बचते, तो हम क्या करेंगे. जैसे आप लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी हम ट्रेनिंग करा सकते हैं. सो इन दैट रिस्पॉन्स, मतलब एक दो NGOs ने और एक दो जगह मेंबर्स ने भी काफी अच्छे सजेशन दिए कि पहले तो उनका एक माइंडसेट बना के और ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाए जिन पे इन जानवरों का असर नहीं होता है, या फिर अगर वो जानवर आते भी हैं द एनिमल्स, तो उनके लिए देयर आर प्रिकॉशंस कि आप कुछ स्टेप्स लगा के इन जानवरों को वहां से भगा भी सकते हैं. तो वो अवेयरनेस नहीं था लोगों में, इसलिए ना वो ट्रेनिंग को बिल्कुल नेगेट कर रहे थे.
तो ये दो So it चीजें means आई। agriculture. It means agriculture related training has to. I mean, this you're addressing the issue of this. What do you call it, chasing out the monkeys and the pigs. No, उसमें ये डालना पड़ेगा जो agro वाला यस training हो रहा है. Okay, fine. करेक्ट। तो ये एक बहुत अलग से फाइंडिंग आई, जो कि वहां पे हाँ रैम्पेंट ट्रेनिंग्स हो रही है ना, वो ऊपर से बोल रहे हाँ हैं ये ट्रेनिंग कर दो, वो ट्रेनिंग कर दो, इनको मतलब ऑर्चर्ड का बना दो, किचन गार्डन और ये सब बोल रहे हैं। तो मेंबर्स वे आर नॉट रेडी। लेकिन अगर उसको अप्रोच अगर वैसे करें कि पहले उनको अवेयरनेस किया जाए और उनको बताया जाए कि क्या क्या स्टेप्स लेना है, उसके बाद ट्रेनिंग दी जाए। तो दैट वाज वन। सेकेंडली एक बहुत सारा ये आया था, खास करके चमोली में, कि बिकॉज इट्स मतलब माइग्रेशन इज वेरी मच। तो वहां पे क्या होता है ना कि वहां पे मेल का भी माइग्रेशन होता है, कभी कभी फैमिलीज का भी माइग्रेशन हो जाता है। तो वो क्या चाह रहे थे ना कि थोड़ा सा इंडिविजुअल बेस्ड कुछ ऐसा ट्रेनिंग करें या कुछ एंटरप्राइज बेस्ड, मतलब क्योंकि बहुत बार ग्रुप एक्टिविटीज में ना दो चार लोग माइग्रेट कर जाते हैं। तो वो उनकी ट्रेनिंग तो होती है, वो बोलते हैं कि आप एक ग्रुप एक्टिविटी करो, यहाँ पे आप सिलाई बुनाई और ये करो, आपको इतना फंड मिलेगा, ये होगा। बट देन वो हो नहीं पाता है आगे चल के। true true. तो माइग्रेशन हैज अ लार्ज इम्पैक्ट। यस धनंजय, आप बताना चाह रहे हैं कुछ? मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाह रहा था। एक्चुअली ट्रेनिंग में लेके कुछ और फीडबैक जो मुझे मिली ना, उसमें ये था कि कुछ महिलाएं का ही ग्रुप है। ऑलमोस्ट जितने भी गवर्नमेंट ट्रेनिंग आती हैं, चाहे SRLM से हो, चाहे नाबार्ड से हो, या फिर किसी और गवर्नमेंट बॉडी से हो, तो ऑलमोस्ट एक ग्रुप ऑफ वेमेन से वही सारी ट्रेनिंग में जाती हैं। उसके पीछे वजह होता है कि वही उनको पैसे मिलते हैं, तो पैसे के लिए वो जाती हैं। तो ये इंटरेस्ट भी उनका पैदा नहीं हो पा रहा है ट्रेनिंग के बावजूद, क्योंकि उनको मतलब ट्रेनिंग के बाद आउटपुट से नहीं होके वो ट्रेनिंग में जो मिलने वाले पैसे है उस पर हो जाती है फोकस। तो एक भी बहुत बड़ी इशू मुझे भी सामने आई, जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था। ओके, या दिस इज इम्पोर्टेंट। तो इट मीन्स एक चीज और मैंने देखा था कि ट्रेनिंग, वही जो सर बता रहे हैं कि ट्रेनिंग तो बहुत सारी हुई है, लेकिन ट्रेनिंग से पर्पज वो कोई भी काम शुरू नहीं की है, और कुछ करना भी चाहती हैं तो उनको मशीन वगैरह मिले हुए हैं, लेकिन उस पे काम नहीं हो रहे हैं। जैसे मैंने चमोली के दशोली ब्लॉक में देखा सर कि वहाँ पे पापड़ बनाने की मशीन 3 साल से रखी हुई है, और एक कमरा भी फंसा के उनका रखा हुआ है, ना तो बिजली दिया उन लोगों ने, ना तो कमरे का रेंट देते हैं, और अभी तक उसे चालू नहीं किया है। और सर एक पापड़ वाला एक केस स्टडी है, वो भी हम डालेंगे रिपोर्ट में। और क्या कर्णप्रयाग में सर वो सैनिटरी नैपकिन का है, वहां पे भी मशीन दिया है उन लोगों ने, लेकिन उस पे काम नहीं हो रहा है। और सबसे अच्छा चीज हमने नरेंद्र नगर ब्लॉक में देखा सर कि वहां पे धूप बत्ती का बहुत ज्यादा उन लोगों का माल जो सामान जो है बेकार हो गया था, वो सप्लाई नहीं हो पाया। वो करीब हमको लगता है कि बोरी से देखा जाए तो 4-5 बोरी वो लोग सामान उनका बता रहे थे लोग कि बेकार हो गया, सप्लाई ना होने की वजह से मार्केट नहीं मिल पाया उन लोगों को। बहुत सारे मीटिंग्स में सर ये आए हैं मार्केटिंग वाले, तो बोले और हम ब्लॉक प्रोडक्ट तो बना देते हैं लेकिन मार्केट नहीं कर पाते हैं। ब्लॉक से उन लोगों का गांव बहुत दूर था सर, करीब हमको लगता है 20-22 किलोमीटर था, और बहुत अंदर पहाड़ी इलाके में था, बहुत पतला रोड था, उस पे बड़ी गाड़ियां नहीं चलती हैं, तो इस एकदम बिल्कुल ही डंप पड़ गया था, नहीं जा पाया। अच्छा, टू थिंग्स। वन थिंग व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हमारा जो इनिशिएटिव्स तो बहुत हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब व्हाट एवर यू आर टेलिंग, आई एम गेटिंग द इन्फरेंसेस फ्रॉम देयर एंड माय फील्ड विजिट्स आल्सो इन उत्तराखंड कि यहाँ पर नीड असेसमेंट का जो इट इज मच मोर लाइक यू नो दिस टॉप टू बॉटम अप्रोच, ये बॉटम टू अप अप्रोच तो होना चाहिए था, इट वाज नॉट देयर। सो नीड असेसमेंट इज नॉट देयर, तो टारगेट है कर दिया,
इस टाइप का चीज हो रहा है। सेकंड जो चीज मुझे लग रहा है कि इकोसिस्टम बिल्डअप जो होना चाहिए था, वो इकोसिस्टम एनालिसिस सबसे पहले करके इकोसिस्टम बिल्डअप करना चाहिए। ये सिर्फ हमारा मार्केटिंग नहीं, पॉसिबली हमारा जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस को लाना पड़ेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाना पड़ेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम हैंड होल्डिंग लाना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। थर्ड थिंग, possibly what I mean my field visits were all I mean are also telling that that we have to have a different approach, as because it is a difficult terrain, so we have to have differentiated approach for the far long places and also nearby places in the block I mean what do you call nearby to the blocks or districts and the far flung areas, because the same kind of product cannot use in those areas possibly. So if we can also segregate that one, that geography specific, I mean there will be a differentiation as well, that if you go to the like this from Chamoli, if you go towards this what do you call this जहाँ से गंगा शुरू हो रहा है, गंगोत्री Gangotri na? So if you देवप्रिया go, if you go to that area, although it is far-flung area, but still this your tourism can work. But in Chamoli districts, there are other areas. I mean, just opposite of your this Devprayaga. So you will see the different kind of needs over there. Possibly in your this your study, you will get that geography specification we have to do as well. Apart from, I mean, when we will do our need assessment properly, then we will also get to know that there is a difference in need. In No, your study it also came, sir. possibly, It came, sir. in your As study Sunil was also. telling ना कि चमोली में और टेहरी में it came very clearly, क्योंकि Yeah. वहाँ के बिल्कुल अलग ही टाइप के फीचर्स आए एंड यहाँ पे थोड़ी इंडस्ट्रीज हैं टेहरी में, तो थोड़ी अलग टाइप के आए हैं. So that has come So from the field also. if you can also, I mean, right. So if you can put the scenarios like one is difficult geography is under, then one is difficult geography, but there is also scope of your this what do you call it? Scope of tourism and other thing like Yeah. business and other thing. Then there is a specification you can develop. I mean, whatever you are telling that theory and other places, there are difference because of this. So it has to be very No, sir, ingrained and the in the system. distance is also a big factor, sir. Means बिल्कुल agree. टेहरी जो है, टेहरी से देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार are closer, and Chamoli से it's almost 150 kilometers more. So 150 kilometers in the hills means it's a 7 hours thing. Yeah. तो 7 से 8 घंटा में कोई भी पेरिशेबल प्रोडक्ट और ये सब का तो बहुत इशू वहां पे हो जाता है. तो डेफिनेटली दैट इज कमिंग. इसमें सर No, I mean it is not. It is not actually. You know that I have seen in couple of other countries where this distance is there, but they have developed the ecosystem. So where did I see it? In Tanzania, if it is very far flung area, what they have developed this small your this what do you call वो जो जहाँ पर ठंडा करके रखता है, so they have developed that kind of things over there. इग्लू हाँ, इग्लू not igloo, this is what do you call जिसमें आलू रखता है, क्या बोलते हैं उसको? अच्छा अच्छा कोल्ड स्टोरेज. स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज. कोल्ड स्टोरेज हाँ, कोल्ड स्टोरेज वैसे करके कोल्ड स्टोरेज बनाया है. तो ये जो इकोसिस्टम बना हुआ है एंड दे आर गेटिंग पेरिसेबल प्रोडक्ट्स मोस्टली योर देयर. आई हैव सीन दिस योर pineapples are there, then your this your pears were there, then your guava was there. एप्पल भी होने लगा है. हाँ, यहाँ पर एप्पल भी है. तो if we can develop that kind of thing, it will also help. Like in our study, that thing should come. That I mean that if we develop the infrastructure, NABARD के पास तो बहुत सारा पैसा है. They can use it for this. I mean, then yeah, please. जी सर, इसमें एक और जो की फाइंडिंग आया थी ना, आपने क्वेश्चन जो पूछा था कि उनसे लोन के बारे में भी पूछना. सो वी हैव आस्क्ड ऑल द मेंबर्स अबाउट द लोन, और उसमें बहुत स्टार्टलिंग आया है सर कि इन स्पाइट ऑफ SRLM वर्किंग फॉर सो लॉन्ग एंड नाबार्ड वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, वो वहाँ के लोग ना लोन नहीं लेना चाहते, मतलब एंड लोन लिया भी नहीं है, बहुत कम.
एक दो साइकिल लिया है 5,000 10,000, मतलब जहाँ पे हमारे देश के दूसरे भाग में लोग 50,000 पर मेंबर जा रहे हैं, 60,000 पर मेंबर SHGs में भी जा रहे हैं, वहां पे दैट क्रेडिट ऑफ टेक वाज रियली 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 लो। मतलब आई थिंक डेटा में सुधीर के पास जब एनालाइज करेंगे तो आएगा ही, बट जो हमने जो जनरली लोगों से बात की ना, बहुत कम था। मतलब वो उतना अपनी सेविंग्स से ही थोड़ा सा करते रहते हैं। हाँ बिना और वो लोग लोनिंग कराए हुए हैं, KCC हुआ है, अरे क्या उसको बोलते हैं, CCL हुआ है, लेकिन बैंक में छोड़ा हुआ है उन लोगों ने, वो CCL को निकाला नहीं है, CCL बैंक में छोड़ करके रखा हुआ है। Interesting. It means serious hand holding is necessary, right? नहीं, ये तो देखिए, दिस इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर मोस्ट ऑफ द, मतलब आप नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे किसी भी स्टेट में जाके एनालिसिस कर लीजिए। दिस इज बेसिकली ड्राइंग गैप, and the drawing gap between sanctioned and draws are huge in SRLM sanctioned loans. So that's rampant. No, it is KCC. बहुत ज्यादा था, बाकी no. जगह तो लोग लेके पैसे को कुछ कुछ करते हैं। He's saying CCL. What Veena ji is telling, it is about your this KCC. KCC is mostly from नहीं the सर, banks. CCL, अच्छा। That's a rampant. SRLM. That's rampant everywhere. I mean, most Uh-huh. of the places the percentage may vary, but the drawing percentage is huge difference, and that has nothing to do with other factors of skill and So training. I mean, is it drawing is not happening because they don't want to do business? Second one, they don't want to take risk. No. They are happy with their life. Then also there is other thing which I have seen that the males, they are most of this in a family, they are working outside and they are also sending money, and family is sustained with that money. So they don't want to take any other like loans and other. What we did in UP during E-Shakti and our other visits, the single category which defines that is that, so there are, as you had said earlier, there are targets and there are guidelines. Okay. Now, there was a new guideline which was set up by central government, which said ki 1 lakh and 3 lakhs. That's the loaning amount you need to give it to SHG. Now, that's a target which comes to SRLM units. From SRLM, there is an official letter which goes to the collector and the banks, the NCC and all. And then the loans are done by bank managers. And it is very well understood. However, I'm sanctioning 3 lakhs. Drawing, I will only provide 1 lakh. The unsaid agreement which is there, nobody allows that. No, So like far, is it the lacuna from the bank's end, or like the people they don't want banks, to draw? no, so banks and people also, they said कि इतना पैसा उठाना ही नहीं है, we don't need it, there is They no are very point. contained. नहीं, मेरा पॉइंट वही था कि जैसे बाकी जगह हम SHGs में जाते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि और पैसा मिल जाए। सर अभी तो हमको 30,000 मिल रहा है, 50,000 मिल जाता तो सर अच्छा होता। वहां पे लोग भी बोल रहे थे कि नहीं सर, हमने लोन लिया था 2-3 साल पहले, 10,000 लिया था, अभी वो चुका दिया, अभी हमको कोई वैसे पैसे का लोन नहीं लेना है। हाँ, आप ट्रेनिंग करा दो, आप हमको पैसे दे दो ट्रेनिंग का, थोड़ा सा आप हमको वो सिखा दो, बता दो, और ट्रेनिंग से हमको क्या मिलेगा ये बताओ, पैसे की बात मत करो। Even presence of MFIs is not there. It's very insignificant. ओनली बंधन बैंक इज देयर, मतलब जो हम ब्लॉक प्लेसेस में गए, 2-3 जगह मैंने बंधन बैंक का देखा, और वो भी बंधन बैंक वाले से भी एक से बात किया तो बोला सर वो क्या है कि हम लोग को मैंडेट है कि इन कुछ डिस्ट्रिक्ट में रहना है तो हम यहाँ पे हैं। रूरल ब्रांचेस का रेशियो होता है ना, तो वो उसी साथ खोला होगा, ज्योग्राफी एंड रूरल ब्रांचेस सेंट्रल। Now I do have a question. I do have a question to Krishna. The you are telling that they don't want to take any loan. So why they don't want to take the loan? Yes, sir. See, one is their risk averse, because the main earning member of the house is the male. Either
driving a cab or yes. Now am you I are audible audible. now? Okay. Yes, you are audible. So what I observed, sir, that why they don't want loans is that they are risk averse. And usually in other places, what happens, the female members take the money, give it to the male members. कि आप सब्जी का बिजनेस करो, कुछ कपड़े लाओ, ये करो, वो करो. बट वहां पे क्या था कि मेल मेंबर्स आर ऑलरेडी आउट. वो महीने में 2-4 दिन के लिए आते हैं या 15 दिन बाद आते हैं, तो 5 दिन रहते हैं, 10 दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं. वो गाड़ी ड्राइव करते हैं, ज्यादातर तो वहां पे गाड़ी ड्राइव करने वाले हैं. मतलब हम लोग काफी लोग से मिले तो दे आर ड्राइवर्स. तो फीमेल जो बोलती है ना कि हम सर 5-10 हजार से ज्यादा नहीं हैंडल करना चाहते, हम 2-4 बकरियां रख लेते हैं, कुछ अपनी किचन गार्डन में कर लेते हैं, या कुछ ऐसा काम अभी मधुमक्खी का आप लोग बता रहे हैं तो हम इसको करेंगे. वैसे हमारे यहाँ पहले से भी मधुमक्खियां रहती थी, लेकिन हम लोग को निकालने का सिस्टम नहीं पता था, तो कुछ हमको उसका फायदा नहीं होता था. So they tell ki we don't want to take chances with a bigger amount. So now can we do a kind of statistical analysis like your this 200, for example, 200 clients, I mean, who are into enterprise or who are the members of SHG, we have interviewed. Amongst them, like 75% or 85%, they told that they don't want to take risk. Of that 80%, 50% is telling that 50% is telling that they don't want to take risk. Then 30% is telling this one. Then there can be one category that they are mixed, like 50% and 60% of this. So this kind of statistical analysis will also help us to understand. And then come that whoever has told that that they don't want to take loan, but they are telling that this ये मधुमक्खी का ट्रेनिंग हो रहा है तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे. It means that you know they either we have to develop some ecosystem which is helping them from top, means in totality, or we have to pick up a couple of these traditional trades and support them. If we can do this statistical analysis, it would be helpful for the whole study. I mean, that can be helpful for NABARD, that can be helpful for us as well. No, sir. In this 400 data, we'll try to get that. दोनों डिस्ट्रिक्ट का हमारे पास अलग अलग है. हो सकता है कि टेरी का है और चमोली का डेटा में थोड़ा सा अलग है, बट वी विल बी एबल टू डू दैट. आप सेग्रीगेटेड डेटा करो, क्योंकि ये तो सेग्रीगेशन हमें चाहिए. दिस इज अ काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड फॉर NABARD also and for us also, that how to take it forward. So this is the way forward. So that will come. और यहाँ पे एक चीज आएगा कि स्मॉल एंटरप्राइजेस की ही बात हो सकती है आगे चल के, जो भी अगर रिकमेंडेशन भी आगे आएगा ना, तो कोई भी एक थोड़ा बड़ा यूनिट और इसका हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो टेरेन है ना, वहाँ की जो ओवरऑल लिविंग कंडीशन है ना, वहाँ पे हम एक इवन ऐसा नहीं प्लान कर सकते कि 20 महिलाएं मिल के एक करें या एक गांव में 2-3 ग्रुप मिल के करें. इट विल बी स्मॉल यूनिट्स. अब देखते हैं क्या आता है. मतलब कुछ तो रिकमेंडेशन हमने लिया भी था उनसे, सजेशन. वो एक बार डेटा एनालाइज करेंगे तो और पता चलेगा. तो मतलब वेरी टारगेटेड एक्टिविटीज नीड्स टू बी डन, एंड आल्सो स्पेसिफिक टू दैट ब्लॉक. इवन डिस्ट्रिक्ट में हम हटा लें तो कुछ ब्लॉक्स के भी निकल के आएंगे कि इन ब्लॉक में, जैसे जोशीमठ वाला ब्लॉक था, तो वहां पे एरोमेटिक प्लांट्स का था. एरोमेटिक प्लांट्स का वो उस ब्लॉक में ही मिलता है. या धनंजय, वो कौन सा एक झाड़ू का वो बोल रहे थे, एक स्पेशल टाइप का एक झाड़ू आता है, वो वहीं पे बनता है. तो लोग बोल रहे थे कि सर ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो यहाँ की 200-500 महिलाओं का हो सकता है, अलग अलग विलेजेस में ये काम हो सकता है. इकोसिस्टम इज ऑलरेडी देयर. यस. एंड वो ये बोल रहे थे कि सर बहुत बार ना हम पे थोपा जाता है कि आप नीचे से सामान लाओ और बनाओ. तो सर हम वो करके क्या करेंगे? नीचे से लकड़ी आता है, नीचे से सब कुछ आता है, फिर हम बनाते हैं. उसकी बजाय हमारे यहाँ जो ये ब्रूम ग्रास टाइप का कुछ एक है, उसे लेंटाना बोलते थे उसको. लेंटाना. लेंटाना. भोजपत्र भी था उधर. भोजपत्र में मिलते हैं उधर. हाँ, भोजपत्र. मतलब भोजपत्र बहुत ही वो एक मतलब एक आर्ट है जो
जो ऑलरेडी खत्म होने की कगार पे है, What is और भोजपत्र? गवर्नमेंट वो पत्ते पे, इतना बड़ा बड़ा पत्ते पे दे राइट द ये बार चार्ट का लेने ऐसा नहीं वो भोजपत्र हाँ, उसका एक स्पेशल वो पेन बनाते हैं लकड़ी का, और उससे वो लिखते हैं, जो भी हमारे मैन्युस्क्रिप्ट या जो भी ये लिख के, बेसिकली दैट्स इज यूज्ड एज ए गिफ्टिंग आल्सो। तो ये कुछ कुछ चीजें बहुत स्पेसिफिक आई हैं वहाँ पे। तो देखते हैं, मतलब वो सजेशंस में भी आएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सजेशंस आएंगे सर इसमें। गुड। सो बट आई मीन स्टैटिस्टिकल व्यू पॉइंट से भी उसको डालना थोड़ा सा कि ऐसा ऐसा है, इतने लोगों ने बोला है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वालिटेटिव एनालिसिस तो होगा ही, बट क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी थोड़ा सा डाल देना, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड। एंड द अदर थिंग आई also thinking that one is your geography, another one is your trade, and also that is there any study on the impact of the trainings? Like did you have any question that आपने कितना ट्रेनिंग लिया है, क्या क्या ट्रेनिंग लिया है ये एंटरप्राइज प्रमोशन के ऊपर? कुछ Yes, ऐसा sir. डेटा आया है? So there are 2-3 questions which are there, which is, so we have asked them about trainings, and we have asked them that were they able to start their business post trainings, and दो तीन क्वेश्चंस हैं, and how useful for which areas of training they liked, etc. So there are 3-4 which are there. So in most of the cases you will see that they didn't start possibly. Yes, Maybe. data suggests that. Data suggests that. Then we can also conclude that the trainings given to them, either it was imposed or it was not in line with the ecosystem available over there. Means whatever you can analyze, but from my end it is looking like that. Sangeeta wants to tell something. Yes. So ये जो Sangeeta, you have to unmute yourself. so am I audible now? yes. हाँ, so all these kinds of findings ना, ये जो बंदर और पीक का जो इन्फेस्टेशन है, ऑल दीज नॉर्थ वाले स्टेट्स में है, सिक्किम में भी आपको यही दिखेगा। ये पहले भी यहाँ पे किया था, बहुत दिनों से ये चल रहा है, और लोगों को वहाँ पे जो लोकल ऑफिशियल्स होंगे उनको तो पता ही होगा इसके बारे में, जब भी वो ट्रेनिंग देने आते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या ये भी Yes. हाँ, तो ये जब वो ट्रेनिंग डिजाइन करते हैं ना अपना जो भी उस टाइम में ये इसको दिमाग में नहीं रखने का क्या रीजन है, ये भी पूछ सकते हैं क्या हम उनको? हमने तो पूछ लिया ये अपने स्टेक होल्डर, मतलब जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको पूछ लिया, एसएचजी महिलाओं को, पर जो ट्रेनिंग देने वाले हैं सप्लाई साइड, उनको भी क्या हम पूछ सकते हैं कि क्या डिफिकल्टी है कि ये लोग इसी को देते जा रहे हैं? उनको तो पता ही है, वो वहां पे रहते ही हैं आसपास। नहीं, उनको भी पूछा गया, जैसे कि सुधीर भी बता रहे थे ना कि वो एक टारगेट आता है और वो टारगेट हमको करना है, इतनी ट्रेनिंग्स करनी है, ये करनी है। तो हमने देखा 1-2 मीटिंग में भी हम गए ना, तो जो ऑफिशियल्स थे उनको कुछ मेथड भी पता है कि इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है और ये ट्रेनिंग किया जा सकता है, बट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम और ये सब ना, वो उतना करते नहीं है। मैंने ये ऑब्जर्व किया, 2 मीटिंग्स में मैं भी गया था, तो उन्होंने बोला कि पहले ही गए तो मेंबर्स ने ये सब सवाल उठाना शुरू किया, बोला कि देखो सबसे पहले हम ये बोल रहे हैं कि बंदर और ये पिग की बात अभी नहीं होगी, है ना, वो हम बात बाद में करेंगे, पहले हम ये ट्रेनिंग का ये कर लेते हैं। नहीं तो मेंबर्स तो, सब मेंबर्स आर वेरी वोकल, और वो तुरंत वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो एक तरीके से, जैसा सैबल सर बोले, इट्स अ टॉप डाउन अप्रोच, कि मतलब ये करना है ये ट्रेनिंग तो ये कर दो, इतने सारे ट्रेनिंग्स हैं, ये 6 तरह के एक्टिविटीज हैं, इसीलिए शायद जो इम्पैक्ट है वो उतना अच्छा नहीं आ पाया है। अब डेटा के बाद हम देखेंगे जो 4-5 क्वेश्चन में कि क्या इम्पैक्ट आया है, नहीं आया है, और ऑफिशियल्स को पता है, लेकिन ऑफिशियल्स गो बाय द टारगेट। इनको टारगेट कौन देता है? इनका अपना डिपार्टमेंटल टारगेट्स रहते हैं। हाँ, तो सबके अपने अपने ये। हाँ, इन्होंने बताया नहीं है इतने दिनों से कि ये सब इफेक्टिव नहीं होते हैं वहाँ पे, या फिर बताने का वो सिस्टम ही नहीं?
नहीं वो बताते हैं these are central, these are targets driven by center. हाँ तो You फिर cannot you and I think you know the system. नहीं सिस्टम तो पता है, लेकिन क्या है कि System, there is hardly any chance. These districts are far flung and so backward. Your progressive districts are not in a position to comment. हाँ सो ये हमको बताते रहना पड़े। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये इनका जो हम सिस्टम है ना, सजेशन इसमें देंगे हमारी यस फाइंडिंग्स यस के बेसिस यस पे, मे बी डेफिनेटली कुछ सजेशंस इसमें आएंगे, कुछ थोड़े से स्ट्रॉन्ग सजेशंस आएंगे। जी जी ठीक है ठीक है ठीक है ओके। वर्डिंग कैसे करना है वो तो देख लेंगे, वो कर लेंगे। मुझे लग रहा है यस यस भैया आप बैठो ना, मैं ऑफिस में हूँ, आप we बैठो want कहीं पे। the suggestions. हाँ तो फिर आप अंदर आके बैठो। What are the challenges? Sangeeta, you have to mute yourself. Actually, what happens that we do have a meeting from 12, हाँ Sangeeta. So आप so अंदर from आके 12, so बैठो Sangeeta is कहीं। also coordinating that one. So anyway, so what are the challenges we have faced? चैलेंजेस में सर सी जो हिल्स के चैलेंजेस होते हैं वही चैलेंजेस हैं। वहाँ का डेमोग्राफी इज द बिगेस्ट चैलेंज। वहाँ का हमारी स्टडी में तो एज सच उतना चैलेंज नहीं आया, क्योंकि वी वेंट थ्रू अ प्रॉपर अप्रोच। हम डीडीएम के थ्रू एनजीओज में गए और उनके थ्रू एसआरएलएम पे गए, फिर डीआईसी में भी। सो एवरीवेयर दे कोऑर्डिनेटेड, सो दैट वे इट वाज फॉर अस इन द स्टडी इट वाज नॉट मच ऑफ अ चैलेंज। लेकिन जो जो उनके जो चैलेंजेस हैं वो तो मतलब जो जनरल हिल्स के चैलेंजेस हैं या जो हमने डिस्कस किया अभी, वो वही हैं वहाँ पे। और माइग्रेशन वाला एक जो मैंने पॉइंट बोला, सेकेंडली ये जो अभी रैम्पेंट डेवलपमेंट हो रहा है ना वहाँ पे, एक्चुअली द पीपल आर नॉट हैप्पी देयर। ये जो भी 4 लेन रोड्स बन रहे हैं, 2 लेन रोड्स बन रहे हैं, और उनका ये कहना था कि सर 20 साल पहले भी ये सारे पहाड़ गिरते थे, अभी भी पहाड़ गिरते हैं, तो ये क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी तो हम और भी फंस जा रहे हैं। प्लस जो व्हीकल्स आ रहे हैं, इतने सारे व्हीकल्स आ रहे हैं, तो वहाँ का जो लोकल जो फ्लेवर है ना वो दिन पर दिन काफी कम होते जा रहा है। मतलब पीपल वेयर थोड़े से मतलब मॉडर्नाइजेशन से बहुत खुश नहीं थे वो लोग, मतलब बहुत जगह जो ग्रुप्स में हमने But don't you think that once these roads they to make with this this what do you call back what is happening over there? But still, if you see the output of all those infrastructures on the local economy, it will be humongous. From that point of view, it is very good, isn't it? नहीं सर, not necessarily उनका, yes definitely No, maybe but because if we more have this your business will be happening, all these things means from that No, sir. perspective. So if you have No, any sir, insight, I would like to know. business is happening sir, but that is again that वो 80-20 वाला रूल है कि वो 10-20% लोग ना, एंड एजेंट्स आर एवरीवेयर। मतलब गाड़ी चलाने में एजेंट्स हैं, दुकान चलाने में एजेंट्स हैं, वो जो सामान बेचते हैं, पूजा का सामग्री है, सब है। तो देयर आर 10% पीपल हु आर टेकिंग मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स, और बाकी लोगों के पास वो जो डिवाइड है ना वो बढ़ता जा रहा है। वी फाउंड मोस्ट ऑफ द पीपल वेरी पुअर। वीना जी, आपका क्या राय है? आप तो मैक्सिमम ग्रुप्स में गई थी, आप बताइए कि जो एसएचजी मेंबर्स थे उनका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था अभी? बहुत ज्यादा वो नहीं था सर। जैसे अपनी तरफ हम लोग बहुत सारे सर्वे किए हैं, उस तरीके का नहीं था। ना तो उनका रहन सहन, ना तो उनका इनकम, और ना तो उनका काम किसी भी तरह से सर। अभी आपको पता ही है कि कई स्टेटों में गई हूँ मैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे उस तरीके का नहीं था। और काम में वो लोग घर का काम करती हैं, उसमें हम लोग चंबा में थे सर मीटिंग में, वहाँ एक लेडीज आई थी,
वो इतना रो रही थी, उसका रात में सुअर पूरा खेत खराब कर दिया था। मीटिंग में आई थी, बात करते हुए रोने लगी कि मैडम क्या करेंगे हम लोग। ताकि तो फिर करते क्यों हैं खेती आप लोग, तो करें क्या किया जाएगा, वही हमारा रोजी रोटी है, उसके अलावा और कोई काम है नहीं। चाहे हमें करना तो है वही, लेकिन नुकसान हर साल होता है। उसका 25-30 हजार का नुकसान हो गया था। उसके आंख से आंसू निकल रहा था, देख करके बहुत खराब अपने को लगा। तकलीफ हुआ कि उसका इतना नुकसान हुआ है, रो रही है। लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है, उसके अलावा वो और कुछ कर नहीं सकती हैं। हालांकि ऑप्शन तो उनके पास बहुत कुछ है, बस उनको गाइड अवेयरनेस, उनको जागरूक करने की, और उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में मुझे नहीं। सुपरफिशियल ट्रेनिंग्स और इंटरवेंशंस हो रहे हैं सर, दैट इज वन ऑफ द रीजन, जो कि आपने पहले भी बोला कि वो टारगेटेड अप्रोच और उसको इम्पैक्ट को आप 5 साल 10 साल तक फॉलो करें और इकोलॉजिकली थोड़ा सा उसको डिजाइन करके देखें, तो वो पेपर में है बहुत कुछ, लेकिन ग्राउंड में जमीन पे कुछ भी नहीं है सर। वहाँ पे फील्ड में जिस तरीके से ऑफिस में वो लोग बता रहे थे कि ये ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग ऐसे कर रहे हैं लोग, वैसे कर रहे हैं, हालांकि 14 समूह के मीटिंग महिलाओं में के क्या, पास जाने के पास कुछ भी नहीं था। हाँ मतलब मैं मीटिंग में गया, वो पिछले 10-15 साल से ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अभी तक मैं पूछा कि अभी आप क्या करती हैं, नहीं अभी तो कुछ नहीं करते, हमारे पास 1-2 बकरी है और हमारे यहाँ गाड़ी चलाते हैं, और महीने का जो भी आता है किस्त विस्त देने के बाद 5-7 हजार रुपए बच जाता है, उसमें बच्चों की पढ़ाई होती है और हम लोग का खाना पीना चल जाता है, और हमको बचाना भी पड़ता है क्योंकि 4-5 महीने तो कुछ चलता नहीं है उधर। मतलब वंस दिस नवंबर दिसंबर की ठंड शुरू हो गई, तो अब तो उनका कुछ वहां पे चलेगा नहीं, मतलब नो इनकम। तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए, महीने का 5-7-10 हजार है, तो ऑन एन एवरेज बहुत कम ही आता है, मतलब एसएचजी मेंबर्स की मैं बात कर। एक साल में सर वो लोग, उन लोगों का इनकम जो था, किसी का 35, किसी का 40-45, मतलब 50,000 से ऊपर किसी का ईयरली इनकम नहीं था। बहुत कम है, बहुत वो वीमेन का है या फिर हस्बैंड का मिला के? उनकी पूरे परिवार का है सर। अरे जैसे आप तो सब लोग अपने हस्बैंड वाइफ बच्चे ही हैं, इस तरीके से ही सब लोग थे। तो उनके मतलब हस्बैंड वाइफ के मिला करके इस तरीके के इनकम थे। वो लोग कुछ इस तरीके का काम ही नहीं कर रही है जिसमें इतना इनकम कर सके। कोई 1-2 गाय रख लिया है, कोई बकरी रखा थोड़ा सा है, ना खेती। डेटा में ये दीजिएगा कि कितना परसेंट मतलब परमानेंट माइग्रेट किया है। परमानेंट मीन्स दे कम बट दे डोंट डू एनी इनकम जनरेशन एक्टिविटीज। दिस मेल आई एम टॉकिंग अबाउट, मेल हु हैज migrated but they have migrated totally. Couple of them, maybe certain percentage, they come back during kheti time. Couple of them they may be staying here. So what's the percentage of it? Because जो रहता है वहां पर, possibly we can do better work with them. So what I am thinking, and also what's your experience over there, that many a times they don't they want to develop themselves but they don't know how to go forward. Do you think that if if we suggest them to organize exposure visits, especially picking up those women who has some interest, who have or to develop enterprise or do something, will it be good for them to start? What's your observation? एक्सपोजर विजिट सर डेफिनेटली हेल्प्स, वो थोड़ा सा ब्रॉडन करने में उनका ये पर्सपेक्टिव, अगर उनका एक्सपोजर हम थोड़े से देहरादून मसूरी इस तरफ के भी ग्रुप्स में भी कराए ना, देन आल्सो इट विल हेल्प सम ऑफ देम, वो तो होगा। वो तो उन्हीं में से ये ना ये 100% सजेशन देना। या that can be a good thing. One thing that Sudhir and Krishna, if you have done some data analysis, that what's the percent of women who is showing some interest to develop enterprise? Any Yes, idea? yes, that is there sir, वो है around 20% तो है, 20 to 25% है। अच्छा अच्छा। some And women are there. okay, do you also think that that we have to take a little bit different approach over there, that as a group, what do you call, group initiative may not work over there,
can we also develop some leaders over there? Leaders means some male entrepreneurs over there who can take the risk, whom we can develop this this leadership skills, then also understanding of the market, everything. They will go back and they will develop a little bit bigger, larger institution, like larger business entity. Is there any possibility like this? यस यस सर, वो पॉसिबिलिटी है, मेल का भी और फीमेल का भी है। इवन द यंग गर्ल्स जो है ना, वो ज्यादा बाहर नहीं जा पाती हैं, वो वहीं पे कुछ छोटे मोटे काम करती हैं या फिर शादी हो जाती है। मेल तो यूजुअली माइग्रेट कर जाते हैं 200 300 400 किलोमीटर। तो वो फीमेल मेंबर्स या मेल मेंबर्स को अगर ये करेंगे तो कुछ, हाँ, I'm talking about this youth को हम लोग अगर पिकअप करें। धनंजय आप बता रहे हैं कुछ? सर ना इस आप जो कह रहे हैं ना, इस हिसाब से मैं एक व्यक्ति से मिला था, उनका नाम था राकेश नेरोला, और वो IITN है, और उन्होंने बहुत दिनों से समाज सेवा में काम भी कर रखा है, इवन चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और उन्होंने इस सेगमेंट पे काम कर रहे हैं सर। वो जो सेगमेंट आप बोल रहे हैं ना, उसमें वो किसानों को एकजुट कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट खरीदते हैं, उन्होंने इवन इंडस्ट्री भी बैठाई हुई है और उनके प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग भी करते हैं। तो जब हम उनसे मिले थे तो उनकी प्लानिंग ये है कि हम सर FIG बना रहे हैं, जैसे अभी वो क्या करते हैं, एक अपने यहाँ माल्टा, उधर माल्टा बहुत ज्यादा होता है सर। माल्टा क्या है? ऑरेंज, ऑरेंज टाइप का होता है वो। अच्छा। तो माल्टा पहले बहुत होता था उनके यहाँ, तो माल्टा की प्रोसेसिंग करते हैं वो। तो जो भी फार्मर्स हैं जिनके घर पे 1-2 माल्टा के पेड़ हैं ना, उनसे पोक खरीदते हैं माल्टा, और उसको फिर प्रोसेसिंग करके उसके जूस पे वो बेचते हैं। तो इस टाइप के उनसे जब मैंने बात की थी तो इस पे वो काम कर रहे हैं। बजाय तो उन्होंने एक पर्सनल अपने लेवल पे, मतलब प्राइवेट उन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बना रखा है। मैं उसकी विजिट भी किया था, मैं पिक शेयर कर दूंगा कृष्णा जी को। बजाय तो उन्होंने पूरी प्रोसेसिंग यूनिट बना रखी है, वो माल्टा पे काम कर रहे हैं। सेव जिसकी बात हमने करी, एप्पल का चटनी, अचार, मुरब्बा भी बना रहे हैं। एक उधर सर फूल होता है, उत्तराखंड का राष्ट्रीय फूल है, बुरांस बोलते हैं, उसका जूस वो बना रहे हैं, वो बना के प्रोसेसिंग करते हैं। तो उसमें वो उसके करते क्या ना, बहुत सारी महिलाएं जो गाँव की होती हैं, वो जंगल से उसके फूल ढूंढ के लाती हैं और वो उनको खरीदते हैं, और इस तरह से वो इंटरप्राइज डेवलप कर रहे हैं। मतलब तो ये पोटेंशियल है वहाँ पे। दिस कैन बी अ गुड सजेशन सर, ये हम पॉइंट ये बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ 2-4 ऐसे इनिशिएटिव्स यूथ लेड हो सकता है, इसमें लोग वहाँ के लोकल वुमेन एम्प्लॉयड होंगे और एटलीस्ट उनका इनकम कुछ लेवल तक बढ़ेगा, व्हिच कैन बी ट्रैक। मतलब सबसे दिक्कत ये है कि डाउनस्ट्रीम काम कर सकती है। बहुत सारे महिला तो एकदम झट से बड़ा एंटरप्राइज नहीं खोल सकती, स्पेशली those who are not aware, those who are not having a very good financial background and backbone also. So possibly I was thinking that in your study, if it comes like that identification of the local youths of both genders, and if we can train them for this coming up, and there will be given support with insurance, then your credit line, then your technical everything, like this ecosystem is very much, so we have to develop one ecosystem for this women, another ecosystem for this youths, because Krishna, I mean all of you will see that if you go to the part with this, they will tell हमारे पास तो ये है, हम लोग तो किए हैं, लेकिन भाई इम्पैक्ट जब देखोगे कि नील बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं है नीचे। नहीं, जबकि अपॉर्चुनिटी है सर, 1-2 जगह हम मिले जिससे उनके प्रोडक्ट को वो सप्लाई नहीं कर पाए। 1-2 जगह धनंजय जहाँ वो मिल रहे थे ना, वो बोल रहे थे कि हमने क्या क्या वो पैक किया था, दाल और ये सब पैक किया था, अचानक से इतना डिमांड है कि रात भर बैठ के उसको पैकिंग की है, एंड दे कुड नॉट सप्लाई ऑल्सो। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि इतना डिमांड ज्यादा हो जाता है और कभी कभी कोई मार्केटिंग करने वाला प्रोडक्ट नहीं रहता है। उनका जो हनी था, जो वहाँ की हनी, जो पहाड़ों की हनी रहती है, उसका भी वो लास्ट सीजन में दे टोल्ड वी वर आउट ऑफ स्टॉक। कुछ अमेज़न से भी किसी ने कर लिया था और वहाँ पे वो सेल कर रहे थे, बोले हमारा खत्म ही हो गया हम नहीं सेल। और कुछ चीज हम बनाते हैं तो वो बिकता नहीं है, और खास करके ये लोग
आपको बोलते हैं ना कि नीचे से ही सामान ला के बनाओ तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है, और कॉस्ट बढ़ जाता है तो सेलिंग प्राइस बढ़ता है, तो वो कोई लेता नहीं है। तो इट वाज वेरी क्लियर कि वो यही के प्रोडक्ट हम बनाएंगे और आप मार्केटिंग में हमको सपोर्ट कर दो तो वो काम बन सकता। एक्चुअली सर ना मुझे जहाँ तक लगता है ना, फूड प्रोसेसिंग में चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा इवन चमोली डिस्ट्रिक्ट में सर ना 3 टाइप ऑफ वेदर हमें वहाँ पे जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसकी खेती होती है। आजकल वहाँ कीवी भी लगा रहे हैं सर, कीवी की प्लांटेशन हो रही है, एप्पल की प्लांटेशन हो रही है। और अगर हम मिड में आए तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो साइट्रस फ्रूट्स हैं, उनकी खेती लोग करते हैं। और लोअर अगर चमोली में आ जाए तो हम मैंगो की भी अच्छी बागान है। तो हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग एक अच्छा विकल्प है वहाँ पे मेरे हिसाब से। नहीं, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी जो चीजें हैं ना, उसका जो प्लानिंग होगा, उसका जो प्रोटेक्शन होगा, और ये सब चीज करके ही आप कर सकते हो। नहीं तो जो मेंबर्स बोल रहे थे ना, और तो वहीं तो डिस्कनेक्ट बन रहा है ना बेसिकली। बिल्कुल। Okay. You let us know that when can we do a presentation, when can we have this your draft report and also a presentation for NABARD. Then we will take it forward. We'll try and send the first draft by weekend. Okay. Today, and next week we can plan for, after we discuss the report, next week we can plan for a presentation with the NABARD. Yeah, once we get their view on the draft report, we can. No. So No. We will discuss internally. So draft report, you will send it to us, and then look at it. subsequently you will do a presentation, and then NABARD will give you the observations, and you revise it and send it their draft, first draft. That's right. That's right. Yeah. So you give it in that way, it would be helpful for both of them. But whatever I can understand, it's a big mess. देखो थोड़ा सा ये क्या नाम है, थोड़ा सा लाइट वाइट दिखा सकते हो कि नहीं? It's a big mess. देखो कैसा तो हम पॉजिटिव वे में ही प्रेजेंट करेंगे सर, जो भी उसमें चीजें हैं, बट द थिंग्स एज यू टोल्ड करेक्टली कि मतलब ट्रेनिंग्स बहुत हुए हैं, लेकिन आज भी टीएनए की बहुत जरूरत है। गोड्डा ब्लॉक में जाओ, तो दिस इज इन झारखंड, गोड्डा ब्लॉक में जाओ, गोड्डा ब्लॉक का एक रूम ना, बड़ा सा रूम, अभी भी आईआरडीपी का जो प्रोडक्ट था ना, वो भरा हुआ है अभी तक। आईआरडीपी कब चला गया? आईआरडीपी एनआरईपी सब हो गया, 20 इयर्स हो गए उसको। हाँ, तो अब देखो वो भी अभी तक भरा हुआ है। लास्ट विजिट में मैंने देखा है कि वो अभी तक भरा हुआ है। वंडरफुल। ठीक है। So Sangeeta, shall we close? Yes. Thank you very much, guys. Thank you. It's good to hear from you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay, bye. कौन लड़की? वो 12:30 बजे आना चाहिए। मेरा पॉलिसी वाला ऑडिटर
चाय पिलाओ, पानी दो। বাড়িতে সবাই কেমন আছে? সবার সাথে দেখা হবে? কোথায় বড় নিশ্চয়
ঠান্ডা পড়েছে ওখানকার লোকজন ওই একটা হালকা ছোটবেলায় কালী পুজোটা পাওয়া গেছে ছোটবেলায় কালী পুজোতে সোয়েটার পরে যেতাম সোয়েটার পরা আমারও তো ঠান্ডা লাগে না কলকাতায় তো থাকে তাদের অনুযায়ী ঠান্ডা পড়ে তার সকালবেলা না আমাদের বাড়িতে মানে এক এক দিনে তো এক একটা গান না তোমার কিরকম রিমিং পায় মাথায় ঢুকে যায় ওটা বেরোয় না আর সকালে আমাদের বাড়িতে এই চলছিল নয়ন তোমার পায়না দেখিতে আর ওটাই না কন্টিনিউয়াস আমার মাথায় ঘুরে যাচ্ছে যে আপনি টিপিক্যাল রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালোবাসেন না রবীন্দ্রসঙ্গীতে একটু একটু রবীন্দ্রসঙ্গীতকে নিয়ে ওটা এত প্রাণের জিনিস না ওটাকে নিয়ে কাজ করতে ওটা আছে এই গানটা ওটার সঙ্গে নরেন্দ্র কুমারের পায়না দেখিতেটা খালি করে তার সঙ্গে মাঝখানে পোর্শন একটা পোর্শন মানে দুটো গান আলাদা করে ব্লেন্ড করা মাঝখানে পোর্শনটা হচ্ছে সাকসেস খুব সুন্দর লাগে আমার আগে একটা ছেলে না এসেছিল এর কার জামাই ছিল সাশা সাশা কিন্তু খালি গলা ও গলা খুব ভালো লাগতো না খালি গলায় লাইট তো খুব ভালো গায়ে ভালো খোলা গলা সাশার গান খুব ভালো লাগতো অন্যটা গায়ে খালি গলা শব্দ মারা আছে हाँ विक्रम सिंह तो साकेत के समय संगीत बहुत डायरेक्ट संगीत को विक्रम सिंह बाबा विक्रम तो बाबा हमारा आजकल जॉयती था भालो লাগছে আর ওরা সাথে থেকে সবাই খুব ভালো অন্য ছাড়া বাজবে এগুলো তো ঘুরছে আমার এটা আমি হাতাচ্ছি তুমি আমাকে একটা পারমিশন দিয়েছিলে আমি সেটা ইউজ করেছি পুরো ঘরটা না অনুরণন করছে অনুরণন না হিন্দি গান ইংলিশ হয় না হ্যাঁ হয় কিন্তু কি হয় বলো তো তুমি না ভাবটা বেরোয় না প্রত্যেকটা ভাষার একটা ইডিওসাইনক্রাসিস থাকে তো এটা না অনুরণনের এটা ইকো তো নয় না ইকো না ওটাকে বলে হচ্ছে মানে ইংলিশে ওটা এক্সাক্ট ইংলিশে এটা আমার পুরো অদ্ভুত লাগছে আছে আছে অনুরণনের ইংলিশ আছে কিন্তু ওই যে বাংলাতে ভালোবাসা আর হচ্ছে হিন্দিতে প্রেয়ারের মধ্যে না অনেক তফাৎ হয় আমাদের যে ভালোবাসাটা যে কত প্রকারের হয়
मोहब्बत होती है, प्यार होता है, प्रेम होता है, प्रेम से এত ইউজ করে হিন্দির মধ্যে রিডিং অলসো ডোন্ট নো which is Urdu, which is Hindi. And ভালোবাসা is not equal to love. But love into general words. Those two words are not It's not appropriate swap translation. Appropriate translation. It is not. তারপর পুরো ঘরটার মধ্যে ভরে যাচ্ছে কি সকালে কথা হচ্ছিল কাউকে দেখতে হবে ব্যাপারে যে আগে বয়স্ক মানুষকে বা even খুব ক্লোজ বন্ধুদেরকে মানে সিডি দেওয়া হতো। এখন তো তুমি সিডি শোনো না, কোথাও সিডি দেয়া সব তো অনলাইন মানুষ, এখন কাউকে কিছু গিফট দিতে হলে কি গিফট দেবে, বিশেষ করে বয়স্ক আর্থিক লোকজনের ডায়াবেটিস, মিষ্টি চকলেট দেওয়ার কোনো মানে হয় না। গল্পের বই অনেকে পড়ে না, গান কেউ সিডিতে রেকর্ড প্লেয়ার না একদম সুন্দর করে হচ্ছে তোমার প্রত্যেকটা জিনিস আলাদা আলাদা করে দিতে পারবে রেকর্ড প্লেয়ারে। আমি তো ছোটবেলায় শুনেছি আমাদের বাড়িতে রেকর্ড প্লেয়ার ছিল, গ্রামাফোন। আচ্ছা গ্রামাফোন, আচ্ছা এরকম সুটকেসের মতো দেখতে একটা রেকর্ড প্লেয়ার ছিল, রেকর্ড আর বাটন। আমাদের ওই রেকর্ড প্লেয়ারে ওই আমি এলপিটি দেখেছি আমাদের বাড়িতে, ফুল দেখেছো? আচ্ছা কারণ আমাদের বাড়িতে ছিল অনেক খুব একটা বাজানো হতো না, ওটা ছিল। আমাদের বাড়িতে ছিল, আমার বাবা কলকাতা থেকে স্কুল নিয়ে আসতেন, বাবারও কলকাতা থেকে নিয়ে আসতেন। আমাদের না 8টা ঘর ছিল, 8টা ঘরের মধ্যে তোমার দুটো আমাদের শোয়া হতো, একটা হচ্ছে বাইরের লোকজনের গেস্ট রুম হতো, একটা হচ্ছে তোমার এই হিসাবে ইউজ করা হতো, দুটো হচ্ছে একটা বাবার লোকজন এলে আর একটা জেনারেল লোকজন এলে। কারণ অফিসিয়াল কারণ বাবার অনেক সময় না আমাদের কেউ এসেছে বাবার লোক এলে তখন আমাদের ওটা বের করে দিয়ে যেত, অস্বস্তি অনেক লোক যেতে পছন্দ করে না, তাই জন্য আমাদের বাবার লোক আসতো। আর তারপরে আমাদের আরেকটা ছিল হচ্ছে গান শোনা, কিরকম হ্যাঁ কিরকম স্কুল থেকে বাজানো হতো, পরে রেকর্ড প্লেয়ার এলো, তারপরে হচ্ছে তোমার ওই ক্যাসেটে আমরা খুব বেশি শুনতে ভালোবাসতাম না, কিন্তু আমার বাবা যখন সিডি এলো তখন আমার বাবা বলতেন যে না এটা কানে ভালো করে শোনা যায়। আর আমরা সবাই সন্ধ্যেবেলায় কি কোনো একটা সময় তুমি হচ্ছে আমাদের মানে একটা নিয়ম ছিল যে হুডিতে একদিন সবাইকে বসে গান শুনতে হবে। এবং আর হচ্ছে আরেকটা জিনিস কি হতো, আমার বাবা সকালবেলায় উঠে না গান চালিয়ে দিতেন, ওই ক্লাসিক্যাল সেমি ক্লাসিক্যাল ওইটা চলতো কন্টিনিউয়াস। রেডিও সকালবেলা সকালবেলা 6টা না 7টা থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রোগ্রাম হতো, রেডিও এফএম গোল্ড কলকাতার এফএম আকাশবাণী চালিয়ে দিত। আমার এখনো মনে আছে আমাদের সারা ঘরে অনুরণনটা হতো, সারা ঘরে। আমি এখনো মানে হাজারিপুরে একটা তোমার আছে মানে ওই ক্লাসিক্যাল
কন্টিনিউয়াস চলে যাচ্ছে তো গানটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে আর আমরা যেরকম ওই বাথরুমে থাকি আমাদের বাড়িটা তো বাথরুম ছিল না আমাদের যেটা কার্ড এখনই বাড়ি তো আমাদের যেটা কার্ড ড্রাইভ আছে না সেইটা আমি যে থাকতে থাকি তার সমান মনে হয় যখন কলকাতা যাই আমাদের ক্যাবটা দিলাম ফার্স্ট হয় যে না আমার একটা প্রবলেম আছে আমি স্পোর্টস স্পোর্টস না দেখতে আমার খুব প্রবলেম আছে আর আমি বাড়ি এই ক্যাবটাকে ঢুকলে আমার কনফিউজ সব জিনিস হয়ে যাচ্ছে যা জিনিস আছে সব হয়ে যাচ্ছে তারপর আমি বাড়িতে ভীষণ কষ্ট হয় কথা হচ্ছে আমার বড় স্কোয়ার সেটাকে কেটে আমার মন্দির হচ্ছিল ওখানে হাত দিয়ে পাথর হয়ে গেছে বয়স ভাইয়ের ঘরে একটা যন্ত্র Welcome back. One way or the other, your help, with your support. Take some rest now. I know. I know. Probably good. No, You think so? I'll take it back anyway. For me, it's fine, but what he brings out is so you get rest, drink some Nibu Pani, something to rehydrate and energize you. And some better food than I eat. Something that can get some body, some eggs, you know. হ্যাঁ কিন্তু মানে ওই বাবা Don't worry. But now you can just take something, maybe some light. Perhaps some soup. Okay. अरे फ्रेश बनाओ ना और वो जब आएगी शाम को बता दो ठीक है ओके चलो बाय ऑल द बेस्ट पेपर सो बाय सो मैडम श्री how is it how are you feeling how's the arm It's fine. but you had some fever in the beginning huh Yeah, I was less polluted air is not suiting me. I got cold and yeah the change of maybe change of weather and was there suddenly a lot of AC and all and it was much more cooler here than here yeah my sister's in Kinor. Guess how much the temperature is? 7. She sent me a photograph. must be below 10 all day. Uh-huh. Oh wow. Oh, what is the highest? -4 is where she is now.
here, going for shoes of the national park. We're all over the place. Baspa River, then Batseri village. She's a very cook. She loves being out and discovering. Old mandir and all. They are very much villain, not Okay, no. Which one is your sister. Weird. Oh, अच्छा. How much? You haven't met her? But I've seen her photographs. She has lost weight or something. She'll be happy to hear. हमारा क्या चल रहा है शायद कल जा रहे हो? Are you excited? Are you feeling up to it? Feeling okay? Yeah. Take it easy, huh? We past time in Nabard, that is Sagan's history, we will be developing the capacity of Nabard professionals on microfinance. Oh, wow. Yeah. Oh, afterwater was from Nabard. Yeah, what's the I thought he is also from Bangladesh. তারপরে বলে সিগারেটের ব্যবস্থা করে দাও মানে আমি কি করতে পারবো তারপরে সঞ্জিতকে বললাম দেখি আমার তো একটাই রাস্তা আছে কাউকে দিতে হবে নাবার্ডের লোক একদম না তো পারে সঞ্জিতকে বললাম জানি ও পাঞ্জাবি একদম মুখের উপরে বলতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দিয়েছিলাম তাও সঞ্জিত একদম তখন খাদ্য তো নিয়ে যাও না বাংলাদেশ থেকে এসে হঠাৎ করে হালকা আমাদের সঙ্গে একজন দিন আমরা মিলিয়ে দিতে পারি না দিল্লি থেকে আমাদের আমরা কাজ করতে করতে মরে যাচ্ছি আমাদের কোনো লোক নেই তোমাকে দিলে তো হয়ে যাচ্ছে এসে একজনকে এক্সট্রা নিয়ে চলে এসছে তাকে বলে দিতে দাও সে নয় হলো তারপরে বলে একজনকে দাও সে হলো তারপরে যাকে ভেবেছিলাম এতে রাখা হবে মিটিং রাখা হবে সে বললো যে আমার মিটিং আছে অন্য জায়গায় I know. Airport. They were going for 2 at 1 and 3. But someone closed it. And even Pablo. Yesterday I was telling Dolly, since we are not organizing food for all this new birthday ceremonies, we are not organizing food for
in symposium, how many people. She was telling me that I will start with unconfession. अच्छा लगेगा सबको. हाँ, it's very nice. It was something I really think that we should, whatever we are doing, we should at least try to do something for the artists also. Otherwise, we are celebrating birthdays and every festival. Why do they call themselves second class citizen? I mean, they must feel like that. I was feeling It was nice that they were here for the Diwali. I was telling them and Dolly that Dolly was home. I was telling that we should increase our हाँ करो एक मेल डालो मैं डाल ऑलरेडी डाल put some numbers, put some evidence like the hotel is put say the normal thing in Bombay Calcutta so much करके डालो and you know just traveling and all that takes 8 बजे के बाद ना बाहर जाके खाने का हिम्मत नहीं होता. और ये मैं lodging बोलूँगा नहीं lodging boarding everything and also that the subsistence we get. and all the thing also. For me it's like I'm going on semi vacation and So after COVID, I think that this hotel for everyone has raised their price. it's massively high. And there is also a fear factor. If you go out and eat from all those thilawalas or something, and then Because I don't like going out. I like going out nowadays. I don't eat food. I've been here for I don't eat food from outside. You shouldn't. I'm very careful about that one that I eat. Do a blood test and people to ask them to come to office. It's here. Or They're around. yeah, my call. Those are very Good. Anybody wants? My friend, I will actually request him to come as well. If you're not getting anywhere, let me know. fine. So I ask Apollo girls to come. That's they come. There? मैं चाहिए No, not because of this. I need to do some blood tests because I met one of my aunts. She is a doctor. So she was saying I have gained a lot of weight. So she was saying that it may be because of thyroid. You have thyroid. No, I don't have thyroid. you check. She asked me to It's a check. simple test. Thyroid is Yeah, it's a simple blood test. When is your next? Do you do an annual check and all? Supposed to do it in March, but not so disciplined about this thing. Why am I getting so much of middle class agreement from everything? Follow me. उसके बाद फिर का senior manager. So we are doing something with CAD, Trevor? I You don't know? I don't know. Technically, it should come to us, but I don't know why. Why? I don't know why. That this is a training program or something. For NDSC and MFI. So it's there, then it's a message. और कैब के साथ ये पहले बार नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ है. Who has the details of this? He said just send an agenda. Who's doing that? Any idea? She?
session at Cap Pune. Yeah, Chandan told me. Well, Chandan knows about this. Oh, Sarah, already आ गए. Did you tell the room? कौन? क्या है? Value chain, right? Climate कुछ. Value chain. Climate value chain. Okay, Chandan already told you. No, he told me that there is something you are going to take a session on SRO. In India, there is a training session of 2 days for MFI staff. What kind of stuff? That he said that you will share the details. I just tell you what I did this. Short presentation, 15 minutes, I think. On SRO, right? Like, One session, second. Very Another interesting. person. We are organizing training of the mid-level officials like DTMs and above of NABARD on microfinance. And the person who is organizing this one, helping us to organize this, he has sanctioned the money. He was telling, NABARD वाले को तो सिर्फ SHG पता है, कुछ नहीं पता. So you have, yeah, so Saturn, M2I, you said Midland. Which one? Midland, Midland Steel, Satin Steel, M2I Midland Steel. Steel, Midland Steel. it's in Chandigarh, right? then SRLN, SRLN, Coming up now. Very cool. So it was good, refreshing for you to be nice to be there. Was there. You said everyone had come down to this time. I mean, it's not consciously planned, but Sure, it just happened that everyone. yeah, I mean, And what about your relative who was driven down to Vizag or something? He come back? yeah, we went for this like after Navratri, Durga Puja. So till we have some Lakshmi Puja after Durga Puja. What we call it, Purnima. Right. Purnima. So between that time, we went there. We took like So, you told you about it. Happy? You told you about it. yeah, he is very happy. He's planning to go to Bangalore. Yeah. I'm telling him this comes to Delhi first, then go. He went with his daughter? No. Yeah, wife and daughter. She's trained with long trips. He? Now trained with long trips. And he has a very basic car, like Maruti Alto. Good. Remind me of a place we always talk about. Good family. And who else? Who else you met? Oh, I met a lot of I met one of my grandmother. Oh.
That side. Yeah, that's that. Oh. You can finish a lot of work at distributing, Acha. gathering, sorting things, Okay. like cleaning my wardrobe. Acha. It was pending for a while, no? Yeah, it was waiting for a while. Like, doing it alone is like, I don't feel like doing it. Yeah. And But this time you had help. Chitra was there na, and she was like, you need to do this. Told them about Megha. 10 meaning? The plan? I What did they say? Good? think you should have done this. अभी क्या तो कुछ तो be happy. Only one session. Yeah, I have to book. I told her that I'll be out till 12. So how was it? Who? How was everything? Here? It was quite relaxed. I think a lot of people was on leave. Yeah. It was pretty much half. And the first 2 days was nobody until Bhai Dooj. So you were not here. Monday was a holiday. No? Yeah, Monday was in. Tuesday, Wednesday, no, hardly anyone came. Thursday, Friday mostly. I mean, Gigi only once. One day. Came back only on Friday. And Sir also went to he was out. Nainital Yeah. and other places. And then he came back and he said thanks to me because I told his daughter to go to Windsor. Oh, they He said, I said, you went to Windsor? He said, yeah, you told my daughter we changed our plans. So he said, we didn't stay there, but he said, but Nainital was colder than Windsor. Huh? He seemed higher. But it was good. Then, so he had, of course, he told Nandi and me, and of course, Nandi understands, he takes it in good stride. But he said, you got the micrometers, micrometer, it's much better quality. They write very well. He said, I think you need to get a writer next time. He sent it to us. So I was checking. Really, they are trying to, the areas we are strong in, the data and all this. They are trying to come in and make us irrelevant wherever possible. That's whole idea. Yeah, I mean, So I said that's what it is. And the timing was also that, the launch. So he is, of course, he gets very. generally they used to launch this after December. And it was not even a launch. Earlier it was just given, remember? It was just, Yeah, not even so- if they launched, Yeah. it was like more closer to March than like not near to our population. Right. They have started doing this for last few years. So he was very threatened and insecure about it. He said, let's do it. And he said, I found mistakes in it. And Nandi told me he found mistakes in the wrong places in the BMR. He's like that. He's never happy. He said, anyway, that was one thing. Then we, of course, we sent out the thing, Nandi added some stuff to the report. I sent another message on Wednesday. I said,
they're a little late because of they had a conference and all. And then at the dinner, ma'am also came. It's quite nice. Don't worry. Except by Friday. They were. I think Nandi sent it. Yeah, they have sent it. I So, saw yeah. it on LinkedIn. A few things. I mean, I told Sangeeta to show it. You're showing 90,000 participants. We want to show 69 people added to the scheme and 25 people. She said, but जितना लोगों ने बताया वही तो हमने लिखा है, but कुछ तो I told him to write few people that there are some people that make it sound this so direct. What others? I said there is like in marketing which has even a measure the score that intention to purchase. Even if you have not done, you have a greater affinity, propensity to try. If you're already in the mindset, a consideration has happened that now I'm going to do more. There it was about master buy cheese. Now because of this program, my next purchase will be Mastercard. Now after doing financial literacy, I have understood better. That itself is good measurement. We should try to find like that. I don't think they have the parameter to measure how many have been affected by this. I don't know, but Because they are collecting pre and post feedback. the post one can be like, have you understood? Are you clearer than before the program? But then the post workshop feedback, I don't think anyone is entering the data and calculating, analyzing it. It is going to RBI. But I don't want to interfere with some other things, so I don't want to say anything. I'm just saying it would be nice. I told them to. And then we added some of the programs, probably those for Siddhi and So, Sunny told you, why I have removed those it was already shown before. districts because the zone we are sending now because of the nature of the data. Yeah. So, and made it they didn't update the data at all. Yeah. Everyone The interest rate, I was wondering whether we should mention about Jyotsna, what you sent later, because GG kept saying, we were saying 71 districts, 30% and above. But after I came back from my Bangalore, 150, this is 30 above. Ah. 71 is 30 above. But after I came back, he kept saying 100, 100. More than 100 if you include the 30% interest rate also. Then I said, when I made that note, is there a change? Should we add that? Because what if somebody in RBI reading? But when I looked at your note which you sent to Jyotsna, which you had not shared with Nandi and Sun. So when we looked at it, it seemed that they were the same. No, It was still 71. yeah, what we did that what the note we prepared for RBI, Okay. DO1, You use the same one. we shared the same note to Jyotsna, and then she asked for the district. Okay. So we separately shared the districts with MFIs operating there who have at least 30%, at least 30% age restrict charging. So that came around 150. No. Yeah, because we added 30%. But 71 was above 30. Above 30. Are you sure? I thought it was 30%. 30 and above. Not 30 and above. Above 30. That's why I rechecked data that time because otherwise it is like I also thought it is 71. Yeah. Yeah. Very funny. You have the list. No, this is what we've done for the purpose of the board meeting and all that. Okay. It said there are 71 districts where maximum interest rate charged by NBC MFI is 30% or above. You're not wrong about it. Or above. 30 or above. So I don't know where the 150 is from. Anyway, so वो भी किया हमने. See,
you added that? No, there was nothing much to be added. So it was pretty much the same. Next Saturday we have to meet Mitrata. Not this Saturday. So we haven't shared the list of the districts because Gigi sir told me let's not share the list of the To districts Jyotsna. to Jyotsna. Just I shared it with him, so he summarized that like these are the MFIs having. It's not 100. It's 71. I don't know where this. Can you? No, in the last iPhone where he said okay. Okay, what is the difference? I will tell you. Why there is a difference. Okay. This is 30 or above. Yeah. This is weighted average. Maximum rates. Maximum. No, but Oh, what you did for Jyotsna? what we did for those Yeah. is that any maximum interest rate that would be charged by policy, By? by the by their credit policy, I mean pricing policy. You looked at pricing policy. Or you looked at actual? No, you would have. No. See, in the note, Yeah. they say there are 71 districts Yeah. where the maximum interest rate charged by NBFC is 30. 30 or above. 30 And or above. above. Or above. So that is 71. Yeah. But then we add 30 as interest rate. 30, we are including 30. But this was also 30 and above. That is excluding 30. That should be. So we wrote it wrong. 30 above. But what we sent to RBI said 30 or above. If you read the note to RBI, it was 30 or above. So that should be written as 30 above. Only above 30. If these are the districts where we are saying that we can. So that means we wrote it wrong to RBI. That should be 30 above, not 30 or above. So now there are 150. That's a serious thing. And for we also did NBFCs and Indian NBFCs there are 47. NBFC there are 47. NBFC MFS. No, NBFC. 47 districts out of this. And so NBFC MFS is less. No, NBFC MFIs were 50 districts. Wow. NBFC is 47 districts and Indian MFIs are 7, 8. The confusion of this interest rate is because they have weighted average also, they have a maximum. No, but we only looked at maximum. That No. time. So when we say what is Yeah. charged, it is very difficult to say what is its maximum.
maximum or weighted average what you should look at. Yeah. You know, the thing is, as Sadaf also told us the board meeting, so You should look at the maximum thing also. even if it's a small segment, Yeah. How will you know what to do with we've done our job, we told us. They want to crack down on them. that's something else. I was also you should also check what exactly is the effective cost to the end borrower of the credit and whether that is significantly high for It'll be more than this. particular MFIs. Yeah. That's true. You're not clear about that. So many things added. Yes, just interest rate. Yeah. There are other processing. Many may have lower interest rate, but processing are 2.5. Interest charge Which is above this. Which is above. And insurance. You can say the same argument of Rajani. They may not want it, but it's still a cost. So processing the insurance would be another 1%. Generally, interests are less than 1%. Insurance. Let's say 0.5. Then what else? Generally, this. Some may have positive cash. Added. Hospital is quite a lot. How much is that? So you're saying 3% more than the maximum. So where you're showing Maximum 3% can go. तो 30% जहाँ दिखा रहा है वो 33 हो जाए. हो सकता है. So we did our job as SRO. We are supposed to check. We did it. We didn't protect the sector. On our own, we did it without being told by. We sent this note in July. So, did you share the Sadaf with you? No. No, I didn't ask him. He was here for just briefly. He was talking to me. No, I can ask someone else also to share. We can work on that and share. Yeah. I just wanted to start putting some thoughts on this cat thing. Going in, we get very nervous about it. So, you have shared the details. Because I Okay. wanted to know, like, what is the agenda? I'm sending you the agenda. It's only about SRO. Like, what is SRO? That's it. Or we should also say what is regulation, what is It's crime protection. So, 90-minute session. like how SROs are protected. What is our mandate? What are we supposed to do? A little bit about what we do. I guess, of course, we make a code of conduct. The whole analysis of interest rates. Like what RBI's mandate is for us. Yeah, we should start off with that. We can start off with what is the thing. Why SROs were made, that was what purpose. And then have we done justice to it? So we can say wherever we file something. There are 5-6 points from the RBI side. Like Yeah. SROs must Yeah. do this. So based on that, we'll say how we have also done it over the time. Wherever we felt some, wherever we've noticed something without mentioning any names, where we felt some third party, third lender, or we felt some portion or some GRM, we've written to the people. We are observing in the field. Very, very good. ये इसको ले जाओ और शायद और बोलो साहब सुरेश कह रहे हैं अपने पास हमेशा रखने को हमेशा चिपक के On the concept note of idea is like what feeling about something you have. I was speaking to Udgesh. He is interested in researching and what I was thinking
has any idea because they are more tech savvy. Because like Patrick was also suggesting the chatbots and all. Is that is possible at all? I mean, if some people may help us to put it in the concept. I think that was what was discussed. The problem is we have to explore something. Although are they not? This is just asking. If they tell us tomorrow, we have to do it. But then, This is our own goodwill. Our RCs have told us. At least for those who are exclusive. But वो अगर सोच लिया ना करेंगे तो इधर उधर से जुगाड़ करती है हाँ इधर उधर से जुगाड़ करती है कहाँ से एक एनजीओ टाइप से लेकर आई फिर एक द पार्ट को just right for you. इसको ले जाओ अपने साथ. हाँ. और ले जाओ. नंबर ट्रेडिंग. नंबर ट्रेडिंग है. इस बार नहीं है जो हेलो. Yes, good morning. क्या अच्छा Really?
get the RBI circular on the risk weightages for consumer loan. Microfinance not included, but non-collateral loans. Not collateral consumer loan. Yeah. But then, the MFI is given under state. Yeah, they said clearly microfinance are not consumer. Maybe the retail sector. The retail sector. There's been some warning back in October. They were saying that there could be some risk. They had come out with something that Sangeeta Das had said. There's been a higher growth of non-collateral. We have to be very careful about it. We're talking some money. Yes, we can do that.
loans to HFCs and loans to NBFCs which are eligible for classification as priority sector in terms of the microfinance can be classified as priority sector. Yeah. Or microfinance? Yes. That's what Then they do. they will do. That's what they Not do. only That's why banks make up that. it's not only agriculture and investment. I'll take a print out of this. आपको लंच के बाद नहीं खाना है, आप जब जाओगे लंच खाओगे। मीटिंग है सर, प्लीज मीटिंग है हाँ सर, मैं सर मीटिंग है ना तब उनके 4 बजे भी 2:30 बजे भी होना था। आपके साथ सर चलो तो फिर और सर नहीं चल प्लीज रवि तो केक भी नहीं खा सकता है। प्लीज Is that the bag? आप फ्रीज में रखो। हाँ? एकदम से नहीं आएगा ना।